हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट मैथ बाय ईयर। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही छोटा टॉपिक। तो एक बात है ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये टॉपिक भी बहुत छोटा है बट इसका जो कमाल है वो पूरा मैथ्स में है। तो जब भी हम कोई इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करना होता है, लाइक क्वाड्रेटिक विथ लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल और समटाइम्स क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक, तो उस टाइम हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो मेथड का टॉपिक है कि वेवी कर्व मेथड। ओके, तो देखते हैं इस मेथड में क्या कहता है कि, तो मेथड में बोल रहा है कि जब भी तुम्हें एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, तो अगर इनइक्वालिटी इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो उसी टाइम हम वेवी कर्व और इंटरवल मेथड्स का हम यूज करेंगे। तो मेथड्स में बोलता है कि फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि पहले तुम क्या करो, जो तुम्हें इनइक्वालिटी गिवन है उस इनइक्वालिटी को पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दो। दैट्स मीन x माइनस constant whole to the power something, that is n1, x minus a2 whole to the power n2, and the coefficient of x is positive and n1 n2 nk are natural numbers. Okay, and the denominator part also same. That's mean f of x is look like p of x divided by q of x. Okay, while q of x is not equals to 0, and p of x and q of x are functions of x, and let's suppose it has a n roots and it has a m roots. So like same roots. Okay, तो इस मेथड में बोलता है कि पहले तुम क्या करो, हाँ, तो f of x is greater equals to 0 or less equals to 0 or greater than 0 or less than 0. So all the four cases there is a only one process is first find the zeros of the functions. Okay, then find the discontinuities of the functions. That's mean zeros means the here is x equals to a1, this is a 0, x equals to a2, this is a 0, x equals to ak, this is a 0. But when x equals to b1, so b1 is not a 0 because it is an undefined form, so b1 is a discontinuity of f of x. Similarly b2, b dot dot bp are all are the discontinuities of f of x. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जीरोस एंड डिसकंटिन्यूटी इस पॉइंट को हमें फाइंड करना पड़ेगा, देन उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एज रियल लाइन तो क्या करना पड़ेगा कि हमें जो जीरोस और डिसकंटिन्यूटी मिला उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है। दैट्स मीन लेट्स सपोज 0 1 2 आर द जीरोस एंड -2 -3 5 आर द डिसकंटिन्यूटीज। तो arrange in increasing order. So first one is -3, then -2, then 0, then 1, then 2, then 5. Point out in real line. Here is -3, here is -2, here is 0, this is 1, this is 2, this is 5. Okay, तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लास्ट पॉइंट को पकड़ो। लास्ट पॉइंट में देखो, लास्ट पॉइंट का बाद जो फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू लेगा, जब ठीक है पॉजिटिव वैल्यू लेते लेते इस पॉइंट पे पहुंचो, उसमें देखो लेट्स सपोज दिस इज नथिंग बट x, let's suppose this is nothing but x minus sorry guys, let's suppose this is nothing but x minus 5 whole to the power what, whole to the power 3. So here 3 is odd. Okay, so if odd or came, then we change our sign. That's mean plus to minus goes, then it came at a point 2. Let's suppose this is x minus 2, let's suppose this is x minus 2 and the power is 2, so power is even, so we are not changing the sign, so sign is changed, not changed. Then again came in 1, if x minus 1 power is odd, then sign change, otherwise 0. Okay, this is the main procedure other. so मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुम्हें प्रोसीड्यूर फिर से मैं बताऊंगा. ओके, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. तो क्वेश्चन सेज कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ x plus 1 into x minus 9 less than 0. इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमारे पास f of x जो है वो है कि x plus 1 and x minus 9. This is f of x. What are the zeros? Zeros are
zeros are -1 and 9. Okay, so what is this is the increasing order. Okay, now in our real line, sorry guys, जस्ट अभी इसको क्या करना है कि हमें रियल लाइन में पुट करना है. लेट्स सपोज दिस इज आवर रियल लाइन, दिस इज आवर रियल लाइन, दिस इज 0, so we are not writing, this is -1, this is 9. Okay, so above 9 the function is always take positive. Okay, and below 9, now positive after 9, and what is the coefficient, I mean power of x minus 9, this is 1, this is odd, that means there is sign change, sign change. This is negative, and at the point -1 also power is 1, that's in odd, so here also sign change, this is plus. So function f of x is negative when the values are x belongs to -1 to 9. now तुम लोग मेरे को बताओ कि यार हम क्या यूज करेंगे कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल. हम इधर यूज करेंगे ओपन इंटरवल बिकॉज द क्वेश्चंस ओनली से अबाउट द स्ट्रिक्टली लेस देन. ओके, तो अगर इधर तो स्ट्रिक्टली लेस देन, सो दैट्स व्हाई वी टेक दिस वन, we are not taking that one. Okay, so if question says less equals to 0, so in that case x belongs to -1 9. ओके, सो लेस इक्वल्स टू मींस क्या हो जाता है कि कभी वो 0 भी हो सकता है, कभी लेस देन 0 हो सकता है. तो 0 कब हो सकता है? जब f of -1 is equals to 0, f of 9 is equals to 0. So that's why we include -1 and 9 also. So our main solution is this one for this question. Okay, तो एक इस मेथड को एक बार आप लोग पढ़ लेना खुद से, ठीक है. तो अगर प्रॉब्लम आए तो फिर बताना, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं बता रहा हूँ. सो इफ now we move at the next question, this question. Now first try yourself, then मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है. जिस टाइप का क्वेश्चन JEE मेंस में पूछा जाता है गाइस, बोलता है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इन दैट केस यू नीड टू अप्लाई Wavy Curve Method somehow. Okay, तो क्वेश्चंस में बोला है कि f of x is equals to x square plus 3x plus 2. Which of the following is true? f of x is positive for all x. तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद का कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूअस, आई मीन जीरोस एंड डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेगा. डिसकंटिन्यूटी, तो f of x is nothing but x square plus 3x plus 2. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम अगर फैक्टराइज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x plus 1 x plus 2. लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं. ओके, सो नाउ दैट implies zeros are -1 and -2. -1 and -2. What is the increasing order? -2, -1. This is the increasing order. Okay, and this function has no discontinuity because this is a polynomial. So now हम क्या करते हैं कि हम रियल लाइन में इसको ड्रॉ करते हैं. This is -2, this is -1. So after -1 we know that is positive. After -1 we know that is positive. After 1, what is the power of x plus 1? This is 1, that's the odd number. So here sign change करेगा. What is the power of x plus 2? This is again 1, this is odd number, so साइन फिर से चेंज करेगा. तो here होगा पॉजिटिव, इस डोमेन में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव. तो फंक्शन कह रहे कि f of x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x. ये ट्रू है क्या? जब -2 से -1 के बीच में कोई x का वैल्यू लाई करेगा, लाइक -1.5, here is -1.5, at that point function takes negative, so this is the wrong answer. So now for the B option, इसको कैसे करोगे बताओ, इसको कैसे करोगे? बी ऑप्शंस को कैसे करोगे? देखो, बी ऑप्शंस का करने का तरीका ये है कि तुम्हें एक अलग फंक्शंस कंसीडर करो. कंसीडर g of x is equals to let g of x is equals to f of x minus 6. okay, so this is positive ना,
So you need to find the values of x such that g of x is greater than equal to 0. इसी को फाइंड करना है. अगर तुम इसको फाइंड करो दैट्स मीन इसको फाइंड करो, एक ही बात हो गया ना. तो जस्ट हम इसको फाइंड करते हैं ना. व्हाट इज द g of x? g of x है क्या? g of x is nothing but x square plus 3x plus 2 minus 6, that's mean x square plus 3x minus 4. इसको फैक्टराइज करो. फैक्टराइज करने से क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो मैं पहले इसको मैं मिटा दे रहा हूँ. इट इज ऑल लिंक ऑन दिस स्लाइड. ओके, मैं फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. सो व्हाट इज द g of x is equals to f of x minus 6, that's mean x square plus 3x minus 4. इसको फैक्टराइज करो. दैट्स मीन व्हाट इज द बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट 4. Okay, it is simply x minus 1 x plus 4. This is the 4x minus x is 3x. This is the minus 4. This is the factorization of g of x. Now what are the zeros? Zeros is 1 and minus 4. So this one is minus 4, this one is 1. After 1, function take positive value. 1, what is the power? Power is 1, so it is take negative. Sign of g of x changes to negative, and at the point 4, this is again odd number 1, the function is positive. So question says g of x is greater or equals to 0 when x कहाँ पे करेगा greater equals to 0? Belongs to minus infinity to minus 4. Here is closed. minus 4 में close क्यों है? Because as a if g of minus 4 take 0, g of minus 4 is 0, that's why here is closed. Okay, so then union close 1 to infinity. और इन्फिनिटी में हम ओपन क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम इन्फिनिटी में पहुंच ही नहीं सकते, तो इसीलिए हम इन्फिनिटी के साइड में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, इस केस में हम उससे क्या करते हैं? ओपन रखते हैं. ओके, सो दिस इज आवर x वैल्यू. सो व्हाट इज द मीनिंग दैट? दिस मीन f of x is greater or equals to 6. This is not. So this is true or not? This is true or not? No, na. X goes to minus infinity to minus 4 and 1 to infinity. But question says when x is greater or equals to minus 4, then f of x is greater or equals to 6. Obviously, it is not true. Now move on to third option. See, f of x is greater than or equals to 6 when x greater or equals to 1. It is true, na. X greater or equals to 1. That's mean here is this value, na, x greater or equals to 1. True or not? तो दिस सी ऑप्शन इज ट्रू, डी ऑप्शन आल्सो फॉल्स. समझ में है ना? अगर समझ गए हैं तो क्वेश्चन को फिर दोबारा देखें. तो अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं. अगला क्वेश्चन आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. दिस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच द गिवन कंडीशन इज ट्रू. ओके यार, पहले खुद से ट्राई करो एक बार. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. आई थिंक तुम लोगों से हो जाएगा. तो क्वेश्चन में ये माइनस वन फैक्टराइज तुम्हें गिवन है, तुम्हें फैक्टराइज करने का कोई जरूरत है भी नहीं. a plus 5 is positive. Just a simple find the domain of it. That's mean find the interval or a lines. Okay, so this is positive. We strictly positive, not greater or equals to 0. इसको ध्यान रखना पड़ेगा. What are the zeros? Zeros are what? minus 5, 1. मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में डायरेक्टली लेंगे. ओके, नाउ दिस इज द रियल लाइन. दिस इज minus 5, दिस इज 1, दिस इज 3. तो आफ्टर 3 इट इज टेक पॉजिटिव. ओके, सो एज अ 3 पावर इज 1 ऑड नंबर, सो साइन चेंज. दिस इज नेगेटिव एंड अगेन 1, it is odd number, power is odd, so again sign change. This is again this is positive, and after 5 it is again odd, so sign is negative. So the question says, let's suppose if this is f of a. So f of a positive when a belongs to minus 5 to 1 union 3 to infinity.
एग्री करते हो या नहीं, बताओ। यही होगा रेंज। और हम इसको क्लोज क्यों नहीं कर रहे, क्लोज क्यों नहीं कर रहे, क्लोज क्यों नहीं कर रहे, क्लोज इसलिए हम नहीं कर रहे कि इधर हमें जस्ट स्ट्रिक्टली पूछा है। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन पूछा होता, आई मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पूछा होता, दिस इज से, इन दैट केस दिस इज द आंसर, बट फॉर आवर केस दिस इज द आंसर। ओके, सो ऑप्शन ए इज, ओके, ऑप्शन ए इज ना, हाँ ऑप्शन देखो इधर ऑप्शन सी में भी है ओनली द क्लोज ब्रैकेट, तो इसको कंफ्यूजन करवाने के लिए दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी इसको इसको सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ। तो ये भी आसान है, जस्ट इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, देन अप्लाई वेवी कर्व इन द फर्स्ट केस, देन अप्लाई द वेवी कर्व इन द सेकंड केस। तो फर्स्ट केस, केस 1, पहले हम ये बता देते कि x प्लस 2 ये जो फंक्शन है मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर कैसे तोड़ा जाता है, x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू -2 एंड x प्लस 2 इसका पहले माइनस व्हेन x इज व्हाट strictly less than -2। Here we use equality, so that's why here we mark. So this one the case 1, case 1 is x square plus plus x plus 2 plus x is greater than 0, that's mean x is less than -2। इसको पहले सॉल्व करो, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज पॉजिटिव। ओके, तो इसका फैक्टराइज करो, फैक्टराइज मतलब बाय यूजिंग द श्रीधराचार्य वी कैन डू x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 -8। देखो देखो ये जो है ये क्या हो रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, मतलब -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4i/2, ये इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। सो इस केस से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये इमेजिनरी में चला गया। नो केस 2, केस 2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 greater than 0 when happen, when x is greater than -2, so that's mean, so x is here, x is cancel out, so x square is greater than 2, that's mean what is the meaning x square greater than 2, what is the range, that's x minus root 2 x plus root 2। okay, this is positive na, this means this, now apply the Wavy Curve method, here is zeros are 0 are minus root 2 and plus root, after plus root 2 this is positive, that is negative, that is positive, so हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए ना, so that's mean x belongs to where, minus infinity to minus root 2 open, since here is only strictly positive not equals to union root 2 to infinity। समझ में आ रहा है ना कैसे क्या चल रहा है। तो अभी देखो ये कंडीशन हो गया, और हमें ये भी पता है कि x ग्रेटर इक्वल टू -2 होना चाहिए, अदरवाइज ये लाइन नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगा अदरवाइज। तो जस्ट क्या करो तुम, दो कंडीशन, ये जो कंडीशन है कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, इन दोनों में से क्या करो, कॉमन x फाइंड, कॉमन x, व्हाट इज द कॉमन x, कॉमन x बताओ, कॉमन x क्या होगा, यही तो होगा ना कि कॉमन एरिया तो ये होगा ना, x ग्रेटर इक्वल टू -2 और एक क्या कह रहे थे, x बिलोंग्स टू -infinity टू -√2 यूनियन √2 टू इंफिनिटी, ये कह रहा है, दैट्स मीन दिस इज -2, दिस इज √2 -√2, दिस इज √2, greater equals to -2, here is this, so this is the first one, okay,
टू इंफिनिटी, root to infinity, and by the circle means open, and the shaded means, dark means closed. Okay, so what are the common area? The common is this one. The common is this one, so that means x belongs to -2 में कॉमन इंक्लूड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, माइनस इधर क्लोज्ड है इधर ओपन है, तो क्या हमें क्या चूज करना चाहिए बताओ? हमें क्लोज चूज करना, क्लोज यूनियन अगेन रूट टू इनफिनिटी। हमें कॉमन एक्स चाहिए, तो कॉमन एक्स मीन्स इसमें क्या है, इसमें -2 इंक्लूडेड है बट इसमें -2 इंक्लूड नहीं है, तो ओपन हो जाएगा, सिर्फ ओपन। ओके, सो हियर आल्सो ओपन, तो कॉमन, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो फिर से कोई, आई थिंक ये क्वेश्चन कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो क्वेश्चंस को फिर से दोबारा ट्राई करें। नाउ ये क्वेश्चंस मजेदार है, इसे ये फाइंड करो, ये खुद से करने का कोशिश करो। तो इसमें क्या करें, इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जस्ट फंक्शन तुम्हें गिवन है और फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। पहले इनको सॉल्व करो। एक नंबर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, फर्स्ट फाइंड द जीरोस ना, zeros are 1 -2 3 -6, discontinuities, this is 0 and 7, these 2 points are discontinuities, these 4 points are zeros. Now add in the increasing order, that's mean -6 -2 0 1 3 7. Okay, now write the, now draw the it is wavy curve, curve draw करो कि कौन सा इंटरवल में क्या लेगा। So this is -6, this is -2, this is 0, this is 1, this is 3, this is 7। तो मैं अलग पेन का यूज करूंगा इसमें। देखो ना, 7 से ऊपर जब जाएगा पॉजिटिव ऑब्वियसली, बट अभी 7 में आ जाए, 7 में आने के बाद क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ x - 7, दिस इज 3, so sign change negative. Now what is the power of x - 3, x - 3 is 5, again sign change. What is the power of x - 1, again cube, sign change. What is the power of x - 0, here is 2, so sign is not changed. What is the power of -2, x plus 2, it is 4, again sign is not changed. What is the power of x plus 6, it is 1, so sign change, positive, negative, 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 this is positive। जब समझ आया ना कैसे करना है? फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या करेगी, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट एकदम पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव इस इंटरवल में आ रहा है, -∞ to -6 यूनियन 1 to 3 यूनियन 7 to infinity। मैंने कोई क्लोज इंटरवल इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज वी ओनली नीड ग्रेटर देन 0। नाउ द सेकंड वन, greater equals to 0, just -∞ closed 1 2 3, एक मिनट guys। तो देखो, हाँ, तो 1 to 3 again close 7 to 8, this is the solution। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, स्ट्रिक्टली लेस देन, देखो कहाँ पे लेस देन है, इधर है,
x belongs to -6 to -2 union -2 to 0 union 0 to 1 union 3 to 7 again फोर में क्या बोला है कि लेस देन इक्वल टू 0 जस्ट क्लोज -6 to -2 -2 to 0 इसको कैंसिल कर दो यूनियन 0 to 1 यूनियन 3 to 7 तो दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है। तो देखो तो इसमें भी देखो एक चीज ऑब्जर्व करने लायक है कि हर एक क्वेश्चन में जब हम वेवी कर्व मेथड यूज कर रहे हैं उस टाइम x माइनस समथिंग होल टू द पावर x माइनस समथिंग इन होल टू द पावर ऐसा नहीं ये माइनस एक्स होल टू द पावर है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा तो हम क्या करोगे इसको चेंज कर दो इसमें एज अ -1 अपॉन n कॉमन ले लो x माइनस है होल टू द पावर n कर ओके देन इस -1 को depends on n if n is odd then it is -1 if n is even then it is positive so then इसको क्या करो ये जो इनइक्वालिटी है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी चेंज होगा तो है तो यू नो द रूल्स। अब ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा देखो इसमें क्या बोला है फर्स्ट log 0.5 log 2 x square plus 1 upon x minus 1 less than 0 ठीक है so this is the panorama so 0.5 is less than 0 less than 1 so the graph like that what is the condition on log x base whatever the condition is log of x base is whatever the condition is x is positive condition is x is positive just apply x is positive just apply that's mean log 2 x square plus 1 x minus 1 this is the first condition okay what is the second condition what is the second condition log a x1 is greater than log a x2 that means x1 is greater than x2 if a is positive or greater than 1 and x1 is less than x2 when our case a is nothing but 0.5 that interval so the condition is log 2 x square plus 1 x minus 1 is greater than 0.5 whole to the power 0 that means 1 this is the second condition now again where is the function it is x square plus 1 by x minus 1 इसको क्या होना पड़ेगा ये तो लॉग के अंदर है ना जिस लॉग के अंदर है तो इसको अभी क्या होना पड़ेगा इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा देन अगेन इट इज अ रैशनल फंक्शन p of x by q of x and q of x not equals to 0 होना पड़ेगा सो x is not equals to 1 तो इसको पॉजिटिव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्या होना पड़ेगा x का क्या रेंज होना पड़ेगा x square plus 1 it is always positive so here is the only is x minus 1 is positive so that implies what is the value of x what is the value so our third condition is x square plus 1 x minus 1 is positive x is not equal तो इन तीन कंडीशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा देन कंक्लूड द आंसर इस तीनों को कैसे सॉल्व किया जाता है कुछ नहीं है ये बहुत ही आसान है ठीक है पहले मैं कंडीशन नंबर 3 में सॉल्व करूंगा तो कंडीशन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज पॉजिटिव
ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग, एंड दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज नॉन जीरो, so only the remaining is x minus 1 is greater than 0. What is the range? Is positive, so x belongs to 1 infinity. Okay, 1 is not included because here is x not equal to 1, x equals to 1 is not possible, so here x belongs to 1 to infinity. So now our second case. कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 को सॉल्व करने का कोशिश करो। कंडीशन नंबर 1 ए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, इसको क्या होगा, ए टू द पावर 0, बिकॉज हियर ए इज 2 ग्रेटर देन 1, दैट्स व्हाई द इनइक्वालिटी आई मीन ग्रेटर देन साइन एज इट इज, so it is x square plus 1 by x minus 1 is greater than 1, that means x square x square, this is minus 1, that is minus of x, that is plus 1, that is plus 1, 2 x minus 1 is positive. इसमें क्या है, ये जो पहला वाला जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ये इमेजिनरी में जा रहा है, इसका कोई फैक्टराइजेशन है ही नहीं, जैसे कि इसका जो फैक्टराइजेशन अगर तुम करने जाओगे तो उसमें इमेजिनरी पार्ट आएगा, x माइनस समथिंग इमेजिनरी इंटू x माइनस समथिंग इमेजिनरी, सो दिस गोज टू वैल्यूज, सो the remaining part x minus 1 is positive, so again here also x belongs to 1 to infinity. Now condition number 2 also given x belongs to 1 to infinity, 3 also implies x belongs to 1 to infinity, करके देखना, ये भी 1 to infinity होगा, और इधर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है ना, इसका फैक्टराइजेशन रियल नंबर में नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ओके, तो इसके लिए इसका नेगेटिव पॉजिटिव होने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके लिए वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर डिवीजन करके उसको हटा दो, सो ओनली 1/x माइनस 1, तो तीनों कंडीशन मिला के हमारा आंसर होता है, फाइनल आंसर होता है x belongs to 1 to infinity. This is our final answer. Okay, now ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व ट्राई करना, ये 4 क्वेश्चंस है, होमवर्क है, इसको ट्राई करके कमेंट्स में मेरे को आंसर बताना, तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन इसको कर पाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कमेंट में बताओ कि कौन सा टॉपिक तुम नेक्स्ट जानना चाहते हो फॉर योर अपकमिंग जेईई मेंस एग्जाम। ओके, तो चलते हैं, इधर स्टॉप करते हैं, थैंक यू। बाय।